So the QAP has been divided, as you know, two or three parts. One part will be dealing about the general guidelines. Second part will be dealing about the detailed QAP, where each and every item will be talked about. There will be another part which will be dealing about the what are the list of you can say the specifications will be used. Then QAP will also define how the system will flow, who is superseding or who is passing and when it is being examined, what is the stage examination and passing, what is the final, and so on. So likewise I try to maintain this thing. So the first thing is that there should be a flow chart of authorities, and they are going to do a particular activities. In this case, we have shown this activity within a bracket against each activity. So this is just indicating how we are going to proceed about it. And this has been now, as per the Railway Board letter number, inspection of composite eye girder or this you can say bowstring arch or any other structures like that. So here it need to be defined. It is for the composite this QAP, it is for composite eye girder, or it is for bowstring arch girder, or it is what type of girder, or if it is a general thing, it can be written here as a general. Shall be done by a fabrication inspection unit. So this is the FIU. Basically it has given you the authority in each zonal railway headed by an officer not below J grade level. So this has indicated who should be the officer of the in charge for the FIU, and this is functioning under CBE. Ultimately CBE is going to maintain the asset, so it is logical also that CBE should head that FIU. Otherwise third party can be the inspecting agency, rights, or any other unit which are supposed to be expert in using this WRI, I think Welding Research Institute, or CEIL, another such limited company under the Indian government. So like that, any PSU will be there which is having expert in fabrication or having expert in inspection. They can be there, but if any detailed guideline is to require, then it is yet to come. So anyway, in the absence of any detailed guideline, this letter or QAP may govern it. Then fabrication of composite eye girder shall only be done by RDSO approved firm. So any girder, whether it is a composite eye girder or it is a bowstring arch girder, it has to be done with the approved firm by RDSO and in their approved premises. So here the clue is that the approval shall be done. I think something is missing. Right. So approval shall be done of RDSO approved firm and in their approved premises only. Many times the same firm may be having different premises. So this thing need to be taken care of. Now this is the sort of flow chart. So first item is coming QAP and WPSS. So preparation of QAP and WPSS shall be done by the fabricator. It can be based on some model QAP, some standard QAP. There can be something, or it can be altogether new. So one thing is very clear, because the person who is going to execute the work, really going to fabricate, shall be given the authority or shall be given the responsibility of preparing the QAP. Then this QAP shall be scrutinized by the executing agency. Suppose it may be railway construction unit,
it can be RVNL, it can be like that any agency who is going to execute the work, and there again there should be some J grade or the equivalent officer, because finally it is coming here in the railway also we are putting J grade equivalent officer, at least that should be the minimum level, higher is no problem. Then finally when it comes to the railway for approval, then the QP shall be approved by inspecting agency, because this agency is finally going to work as per the QAP. So if there is any doubt or the inspecting agency wanted to put certain additional conditions, some constraints, some strict measures, they should do it. Now this is what I am telling, because we have already issued a model or a standard QAP. That standard QAP may be approved by the railway board or maybe RDSO or zonal railway. There has to be some standard. Now when we deviate in a principle or in a material manner with respect to this standard QAP, then in my opinion CB can be authority who can apply his mind and given the approval for this QAP. But it is yet to be decided whether it will be CB or it can be CAO or it can be PC or it can be zone or it can be railway board or it can be RDSO. Some agencies should be there. There we cannot leave it hanging. Now similarly WPSS will form of QAP. So the moment we are issuing the QAP, WPSS will get also automatically approved. But for approving WPSS, there is a certain procedure. So in QAP, we can list it that WPSS will be approved after approval of QAP, and in that we can write down what is to be done for the approval of WPSS. WPSS approval, it is a must that a sample is to be made, and that sample is to be got tested in lab for destructive testing as well as non-destructive testing with respect to its appearance, shape, size, all those things. So that sample will give you a very good what can say, the confidence about the weld what we are going to do. So that is how out of these 3-4 sample we can choose the best one, and accordingly WPSS can be approved. So that is how this thing is done. Once the WPSS is approved, then comes the WPQR, means you are approving the WPSS. Of course, at the time of a WPSS, there should be some approved welder. But there may be more than one welder required to execute the work or to fabricate. So in that case, we may require multiple number of welder, and for each welder, WPQR shall be approved. Now here, whenever we are making this flow chart, in that we can always mention there shall be different annexures. Each annexure, what are the material should be included into that, where it is linked, that can be given here. So here, for instance, it has been given annexure 1 and annexure 3rd. In annexure 1, there may be certain item related to QAP. Annexure 3, there may be item related to WPSS. It is mentioning here annexure 3, item number 7. Likewise, Ian mentioned annexure 3, item number 6. So anyway, all those things can be given. So for WPQR, first it is to be submitted by fabricator, then its paper, everything should be scrutinized by the executing agency, their J grade or equivalent officer, like whether the WPQR has the photo of the welder, whether it has having the qualification record of the welder, whether it is having appropriate years of experience of the welder, whether it has done all the requisite testing, it has passed, everything is done. So all those things, let it be scrutinized by the person who is dealing with this fabricator and the contractor on day-to-day basis. Whether the qualification test of the welder is as per approved WPSS, this is finally to be inspected by the inspecting agency or FIU. Then approval of welder based on the qualification test report, again it shall be given by some FIU. See, the thing is that it will be streamlined and simplified the process. Instead of every time we run to CB or we run to RDSO or run to railway board, it will take unnecessary delay. So when the FIU is there and FIU is an body which has been approved by RDSO, then we shall not
having any doubt on it, and we must give lot of power to it so that let it do it. That is my opinion, but what finally will be approved by RDSO or the board, it will be having the upper hand. Then the next item you can say, after we have all the setup instrument is in place, then the raw material. Again, how the raw material is to be inspected, how it is to be passed, and all that thing will form the part of the annexure. In that, procurement of raw material will be done by the fabricator or the contractor. Then inspection and clearance of raw material as per approved QOP. Why approved QOP? Because the QAP, it has to be mentioned what are the tests are mandatory, what are the certificates to be provided by OEM, and how that certificates provided by OEM and test they are correlated. All those things has to be done. So for that 100% verification and checking is to be done by executing agency. There should not be any dispute on the later date that the contractor will say, sir, I have provided the better good material, but the executing agency, they have not inspected, and I don't know why that they have rejected the material. So before calling the FIU, executing agency must satisfy themselves that yes, the material is okay. Now clearance should be given by FIU. Clearance to proceed. In case of FIU, it may not be possible to examine each and every bit of the material. But because executing agency has given, so FIU, it is possible for them either to verify the material or to verify material with respect to the record or to verify the records. All the three type of verification and check is to be done by the inspecting agency, and then finally it is to be cleared. Then comes the item layout on the template floor. As we have discussed today morning, and it has been explained to great extent that why layout is important. So even though we can say that yes, all this thing can be done on the CAD drawing and it can be seen on the computer. So this thing I will leave to the wisdom of the FIU, but this layout of the joint and detail, this should be specified in QAP, agreed by FIU, and after that it is to be scrutinized by the executing agency, and approved of layout can be given by the inspecting agency finally. So method should go in the QAP, how it is to be done, and action on that method will be done at this stage by various stakeholder as it has been specified. Then next item is coming master plate, template, profile gauges, etc. we have discussed today morning. These annexures I will take care little later. It is already there in later slides, so we will discuss in detail. So again, these has to be prepared by the fabricator, scrutinized by the executing agency, and final inspection and clearance given by the FIU. Now here important point is that because once the FIU clears all the master plate, all the template, all the gauges, then at every stage these are basically the calibrated and certified tools to verify the correctness of the every step. Whatever we are executing at every step, it will be corrected, it will be verified. So after that, the role of FIU will be slightly reduced because all the preliminary thing has been set up. All the clarification, all the verification and accuracy will be examined using these tools at various stages by basically the executing agency. Fabricator has to do, but executing agency has to satisfy himself at every stage that they are getting the better quality material. Now comes after that the fabrication of the girder. Fabrication of the girder, it is having so many items like whether approved drawing is being used, approved QAP and WPS is there, approved raw material is there, approved consumables are there, approved welders are there, approved master plate.
All these things now it is the responsibility of fabricator to examine and satisfy. He will give us a letter to the extent that yes, I am using all those things and these are the credentials and these are the things are already approved by the FIU. So there will not be any doubt. Then when the material is cut, after only it will be used. So after cutting, it is to be stage inspection by fabricator and then random check by again executing agency. After that, once the material is cut, the executing agency shall check whether the material is of appropriate quality, whether the heat mark etc. has been transferred on the cut material, whether the material has been cut to right to the size with proper extra margin for the grinding or milling or any item. So let it be verified by the executing agency. At this stage, because you are using all the tools, all the checking equipment certified by or approved by the FIU, therefore there is no need for FIU to again come and check it. And if we keep on insisting FIU to come at every stage and check it, I feel it will unnecessarily delay the process of fabrication. In any case, it has to be done by minimum these two levels. Here I am taking fabricator and contractor equivalent, but equivalent does not mean the either signed by fabricator or contractor. No, both are same, but signature should be in any document by both the parties, because work is executed by fabricator, and in case of any arbitration, contractor will be coming in the picture, not the fabricator. So that thing we have to be taken care. Next item is dressing by grinding or edge preparation. All these things again fabricator has to do, and then random checking to be done by the executing agency using the profile gauges. Somebody is opened his mic. Any question? Any question? Okay. Next item is drilling. Again, drilling is the stage inspection by the fabricator and random check by go and no gate by executing agency. Here also, drilling, what executing agency has to check it, whether the dia is accurate, okay or not, whether the spacing between the holes is correct or not, whether the spacing and edge distance is correct or not, whether the spacing of a group of the hole and the group of the another group of the hole, whether that spacing is correct or not. So all those things is there. What he is going to use? He is going to use again the gauges and templates cleared by FIU. So there is no need for FIU to come again and do the same job what can be done by the executing agency. Anyhow, executing agency has to give a certificate. Then item coming is saw welding. Again, stage inspection by fabricator, verification of record and random job sample verification by executing agency. Now here it has been slightly increased, verification with record and random job sample verification by executing agency, because presence of engineer of executing agency round the clock at the site is at the workshop may be difficult. Therefore, whenever the record is available and as per the record whether the thing has been made correctly or not, that has to be verified. So engineers from the executing agency can visit occasionally and keep on verifying all those things. If he is available throughout and he is verifying each and every component at each and every stage, it is very good. But many times this may be possible, may not be possible. After all, ultimate requirement of giving the correct goods is the responsibility of the contractor. We are from the owner side, we are there to check the accuracy. That check can be random. Now, verification of record and random job sample verification by executing agency. Once it has been verified by the executing agency, then he can give a certification to the FIU, and FIU can come and inspect. Now FIU cannot present all along the welding is to be done. They will be checking randomly. They will verify whether the record has been maintained correctly. With respect to the record, post welding they can examine and check it.
They wanted, they can do destructive testing, they can do non-destructive testing. So what is important at this stage, what is important? What is called run on and run off pieces. Run on or run off. Because these pieces, they will tell you the beginning and end of the welding. And if we are able to examine these pieces and we are able to do destructive testing on these pieces, then we can say your work is good. Only thing is there, run on and run off pieces has to be taken from the actual job. Therefore, if executing agency is visiting, then they must give their intention that run off and run on pieces shall be abrasive cut and removed in their presence, so that they will give their signature and marking on these pieces, so that it will be to their satisfaction that these are the pieces belonging to the job alone. Otherwise, it can be doctored. So, in order to ensure the fairness, it can be done in presence of FIU. Now, similarly, testing of DTP, micro etching and ultrasonic testing is to be done by fabricator. This is related to joints or welding done. Now here the same thing as per the requirement by the executing agency. And random testing and checking can be done by the inspecting agency. Now requirement of executing agency, if they are saying they want 100% is to be done, it will again reflect in FIU, QAP. It is to be done 100%, it is to be done 50%, or which type of joint is to be done, which type of joint is not to be done. All this thing has been mentioned in QAP wherever we wanted to do. So QAP is going to be a very big and voluminous document. And the same thing again, it will be random checked by FIU. So that person or whatever unit is there, or the authorized person from FIU will be checking depending upon the you can say the severity or the importance of the member and the joints. Similarly, carbon dioxide welding for the component. Here you can say fluxed core, arc welding. So this type of, whatever type of welding is there, these are, the list is not exhaustive list. Whatever thing is felt by the or it is required for completion of the job, that must be included in the QAP or in the flow of responsibility. So again, stage inspection by fabricator, random checking by executing agency, and testing and the DTP as per requirement by inspecting agency. So again, it will be decided what is the role of FIU and what is the role of executing agency. Stud welding, stage inspection by fabricator, executing agency as per BS 115. So Railway has given one BS 115. In that they have mentioned the detail, how it is to be done, when it is to be done, what are the tests is to be done. So that all has to be listed out and accordingly it is to be done. And inspecting agency as per discretion, because this is not a very critical item in that way. So, but it has to be checked. So executing agency has to do whatever percentage it has to be done, 50%, 100%, or whatever is mentioned in the BS 115. But inspecting agency or FIU, they can do random checking because they are doing a second level of check over and above the executing agency. Now, at this stage, we have seen that our entire girder now more or less is over. So, the inspection cell of inspection call to be given to inspecting agency with 4-point certification. So, this is given by executing agency. Whether he will say that work has been done as per these 4 certificates, it has certified, and then they should call the inspecting agency. Otherwise, inspecting agency will be more or less become like the site engineer or site supervisor for the executing agency. That is not the way.
executing agency is having the first responsibility, and inspecting agency or FIU, they can come as and when it is necessary, because this FIU may be inspecting plenty of girders being executed in the same zone, whereas concerned deputy C or their supervisor, they are limited. Their jurisdiction is limited to the work being done by them. That is why the executing agency or the executing authority, they are more, their presence is more at the fabrication side. They should inspect the work more thoroughly, and they must give the certification that the work has been done in accordance with this QAP and whatever the other guidelines. If executing agency feel there can be a signature, or first they can obtain a letter from the fabricator and contractor and they can countersign over that and send it to the FIU. That is also possible. You want to involve fabricator and contractor as equal responsible so that tomorrow he cannot shirk his responsibility. Yes, good, it can be done. And in any way, the signature of the fabricator and contractor will be there in all the record, in all the register. So you can quote that also, the executing agency, and then call the inspecting agency. Now at this, after this stage, there is some distinction has been made with respect to the first girder and second and subsequent girder, because here the role of interchangeability will play. Now this FIU, they have to satisfy whether the work is being done and classified as interchangeable or not. What is written in QAP? Based on that, FIU will definitely say work is being done interchangeable. And how it will say? It will say based on its stage inspection being done at the workshop. So if they say it is interchangeable, then the procedure become detailed for first girder, and from second girder onwards it will be relaxed. If it is not classified as interchangeable, then every girder is first girder. So every girder has to be done in a very detailed manner. So that difference is coming. It is again depending upon the quantum of work and how much we are repeating the work. So if it is the case of the first girder, then the trial assembly inspection, fabricator will, his job is over, then the contractor has to arrange for erection of the work, whether it is the fabricator or another agency, whatever it may be. The work has been erected or it has been done before trial assembly. They had made everything and they are ready with the trial assembly. Then they can call the inspecting agency, and then the inspecting agency, after seeing the trial, they will say yes, everything is over, all the joint is okay, you are doing the work properly. Many times it may also be necessary that the inspecting agency give the permission for doing the trial assembly. They can be available during the trial assembly, and they ask them to open and examine after the trial assembly. So both ways possible. Sometimes this trial assembly is done in a upright manner. That means it is going to take dead weight. Sometimes trial assembly is done in horizontal manner, so that it will not able to take the dead weight. It is just going, just telling you that the all the fitments, all the joints, everything is matching each other, and whenever the assembly is being done in the field, it will be all right. So it is again to be defined in the QAP, whether you are going to do trial assembly upright or you are going to do trial assembly in horizontal plane parallel to the ground. After the trial assembly is over, again permission for dismantling of the trial assembly is to be given by inspecting unit, because inspecting unit is supposed to measure all the dimensional accuracy in the trial assembly. Unless this job is done, they may not permit. So permission from the fabrication inspecting unit is important at this stage. After the trial assembly is dismantled, then again FIU role is there
it has to be done a detailed inspection of the dismantled component including holes. Everything it has to inspect. It has to inspect with respect to any hole elongation, buckling of the member, bending of member, cracking, any sort of failure in the member or in the joint or in the gusset or in the weld, everything has to be seen at this level. This only will tell if we are able to fit entire member, it is able to sustain at least its dead weight. Then I can say yes, now this structure can be erected in field, it doesn't fail under the dead load itself. So that is important, and if there is any problem, then again from here this level the entire matter will be referred back to design office for rectification or the correction of the defect, and then whatever correction is needed, that has to be carried out. Again trial assembly will be done. Again it has to be, its deflection and all other parameters shall be measured, and again it has to be dismantled, and again those components which has failed earlier has to be examined and satisfied by FIU. Sometimes it may also happen that because of strengthening one particular component, the load is transferred to some other component in a larger level, so some other component may also get damaged or distorted. So again it has to be examined. So this will set the, again you will go from right here up to the top and start everything afresh. So that has to be seen. Now if we are happy that first trial assembly is over, girder is passed after erection and after dismantling, everything fine, okay, and our structure is also classified at the procedure, so not the structure, the fabrication procedure or the processes has been classified as interchangeable. Then second and subsequent trial girders to be done in the leaf assembled condition. In that case you will not going to do entire assembly again right from the beginning, everything is not to be done, right? In that case detailed inspection of component is required. They can decide it which are the component is to be inspected, and then finally girder will be passed. Now after this, approval of the inspected component if found satisfactory, metallizing and painting is to be done. Here two things is that either component or the complete girder. So this is the way it is to be done. Then metallizing, painting as per the approved QAP, then final clearance. After that, dispatch of the girder components to the erection site. So there is no role of inspecting agency. There will be now only the executing agency, contractor, and they will be employed. And in the site erection again has to be done by the contractor under the guidance of the under the supervision of executing agency, and after that executing agency has to take the all other dimensional parameters, all the recording, camber, etc., whatever is needed or listed out. Based on that they will do their thing and they can pass everything, and then finally it will be put for the billing and all other thing and handed over to open line. That those things will be subsequent thing is there. Whenever we are making the QAP, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है. QAP को आपको बार बार कैलिब्रेट करते रहना पड़ेगा हर वर्क्स के लिए. उसकी फैब्रिकेशन लोकेशन है या जहाँ पे इरेक्शन करने वाले हैं उसके हिसाब से, अगर आप में मटेरियल में कुछ चेंजेस आता है, ड्राइंग में कुछ चेंज आता है या नई टेक्नोलॉजी कुछ आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसमें चेंज आएगा. तो QAP में एक तो ब्रीफ डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट नंबर आ जाए, क्योंकि पर्टिकुलर के लिए एग्री होगी, कल को कोई इसमें आर्बिट्रेशन वगैरह होगा तो ये पढ़ी जाएगी. इसमें लोडिंग स्टैंडर्ड गर्डर का क्या, ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई. इसका कौन कौन से स्पेसिफिकेशन इसको गवर्न कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी ड्राइंग हम यूज कर रहे हैं, करेक्ट ड्राइंग मेंशन होना बहुत जरूरी है. और उसके साथ ये इंपॉर्टेंट आ जाता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन एंड इंस्पेक्शन. तो जो ऊपर आपको पहले मैंने दिखाया था फ्लो ऑफ अथॉरिटी और फ्लो ऑफ द इंस्पेक्शन, वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है QAP को
प्रॉपर प्रैक्टिकल बनाने का। अब इसमें क्या क्या आइटम इंक्लूड होते हैं, जैसे ये डिटेल ऑफ वर्क में आएगा, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, कौन सा जोन है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन कर रही है, उससे क्या एग्रीमेंट नंबर है, कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी कौन है, फैब्रिकेटिंग एजेंसी कौन है, सबका डिटेल आना चाहिए। इंस्पेक्टिंग एजेंसी कौन है, ये रेलवे वाली FIU है या और भी कोई एजेंसी है, QAP क्या है, QAP का नंबर, देयर में भी मल्टीपल नंबर, सो ये QAP का नंबर जो है डिफाइंड हो जाएगा, बाद में उससे आसानी होगी डील करने में। एग्रीमेंट LOA नंबर, डेट ऑफ एग्रीमेंट, कंप्लीशन डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये फाइनली इंटर होकर साइन होकर जमा हो जाएगा। डेट ऑफ MOU बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड एप्लीकेबल, ये जो इंटरनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इंडिया में हो सकता है विद इन इंडिया एंड स्मॉलर प्रोजेक्ट में ना लगे, लेकिन बड़े में लगेगा ये। स्कोप ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ गर्डर शुड बी एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या स्कोप डिफाइंड है वहाँ पे क्लियर कट होना चाहिए, नहीं तो कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉब्लम करेगा। एप्लीकेबल RDSO ड्राइंग नंबर, चूँकि हम ये लेके चल रहे हैं कि जो भी QAP फील्ड में अप्रूव होगी वो RDSO द्वारा दी गई ड्राइंग के लिए ही एप्लीकेबल होगी, और जो RDSO की ड्राइंग नहीं है, जो नॉन स्टैंडर्ड ड्राइंग है, उसके लिए दूसरे तरह से काम करना चाहिए, उसमें ज़्यादा डिटेल स्क्रूटनी की जरूरत पड़ेगी, और मेनी टाइम्स RDSO डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो सकती है। तो अगेन इट इज़ ए मैटर टू सी कि हम कितना रिलैक्स करते हैं। देन what are the other specifications and any other relevant detail which is deemed necessary either by the fabricator or by the FIU. Then it is a suggestion that railway may have a model QAP. This model QAP can be modified and used again and again. This will greatly reduce the work of the fabricator actually, and it will also reduce the ambiguity in the work. Project specific QAP is to be scrutinized and approved by the inspecting agency. Now, at this point, executing agency's role is also important. They shall also go through and they will say, yes, it is more or less as per with the model or standard QAP. And these are the point which has been at the deviation with respect to modern QAP by the fabricator. Now, उसी पे deliberation ज़्यादा बढ़ना चाहिए, otherwise it will take little more time. Now, work has to be ensured that it is done as per the approved QAP, and unavoidable changes. This is an important point. Unavoidable changes can be done in QAP on case-to-case basis with the approval of Chief Bridge Engineer of the railway. This is my view. This thing can be RDSO or Railway Board or CAO or anybody. So this thing need to be defined in QAP before issuing the model QAP. All the stages of the work should be studied in detail prior to start of the work, so that we shall not have any stalemate or somewhere we stuck up. All the approvals related to QAP and WPSS shall invariably given by the minimum J grade officer. Inspecting agency means the fabrication inspection unit of the zonal railway, FIU, third party engaged by the zonal railway. The final inspecting authority shall be RDSO certified final fabrication unit set up by each zonal railway headed by officer not below J grade under the CP. So that is what is this railway board letter says so far, and if there is any change or anything, that has to be duly ratified. Alternatively, zonal railway may engage a specialized third party unit. This already we have told, and test to be done by NABL or NABCB, means it is the accredited body. These are the accredited body, and they are telling the accredited laboratories. So then things will be better, because already it has been scrutinized, their procedure has been established, they may be having some competency certificate, so accordingly it is to be done. Fabrication drawing shall be made on the basis, this is an important item, fabrication drawing shall be made on the basis of approved structural drawing, if required as per the paragraph 1.2 of IRS D1. Fabrication work is to be undertaken on the basis of these fabrication drawing only after approval of engineer in charge of the product.
Also, on completion of the work, contractor should supply the completion drawing along with alteration if any. Now, these fabrication drawing only after approval of the work is only meant that the engineer in charge of the project should be aware that these drawings should be used at the stage of fabrication, so that his supervisor, when visited to the site, he will not be taken by surprise that instead of having a standard drawing issued by RDSO or by the railway, they are using some fabrication drawing signed by the fabricator. He may create dispute. Similarly, if it has been seen by FIU, then they may also have the dispute why you are using some unauthorized drawing. At the same time, these fabrication drawing is an aid for fabrication, and this drawing will never supersede the drawing issued by the RDSO or the railway. This is an aid so that the particular portion of the job is to be enlarged and made handy for the fabricator or their staff, their artisans. It is for that purpose. So this has to be kept in mind, and designated engineer in charge must say that yes, it has been done, I have seen it is having my. But this does not mean that if there is any discrepancy or there is any defect or there is any problem in the fabricated structure, that will be taken if as it has been done with respect to these fabricated drawing, and this is the responsibility shift from the contractor and fabricator to the railway. No, this is also to be clearly mentioned. The accuracy of the work and job will still rest with the contractor and fabrication, not the engineer in charge or not with the railway. ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो आर्बिट्रेशन में हम लूज करेंगे. Am I audible? Yes, sir. Sir. Yes. बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt? Any query? Shall I proceed? Yes, sir. Or you want to have some 5-minute break? I have taken almost about 1 hour. So we can take, yes, Ashok Singh is nodding his head. I can see him. Yes, we can take some 5-minute break so that I can refresh Yes, sir, myself. 5 minutes. Yes, sir. Good. Now, what are the details included in QAP? What I had proposed around there, some 9-10 details. Number one will be what are the various components of the operations. And during these operations, all while checking these components, what are to be checked? What are the characteristics that are important to be checked? Now, what is the frequency when it is to be checked, and what shall be the type of check? What is the reference document? Then this document is very important. It is telling about the fabricator's quality control. So fabricator is also having a quality control unit within. So any fabrication thing must find a place in the fabricator's quality control document. वहाँ पे कौन चेक कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हमें ये बताएगा कि फैब्रिकेटिंग एजेंसी भी क्वालिटी कॉन्शियस है. यही पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर फैब्रिकेटिंग एजेंसी इज ISO सर्टिफाइड, तो ISO में उनका एक अपना प्रोसीजर होता है कि कोई काम कैसे करेंगे और क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है. तो ये हमें अगर ISO सर्टिफाइड फैब्रिकेटिंग एजेंसी मिल जाती है तो ये रेडीमेड अवेलेबल है और ये हमको बहुत हेल्प करेगा क्वालिटी मेंटेन करने में. नहीं तो डॉक्यूमेंट उनके पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हमें बनवाने पड़ेंगे. अगर अवेलेबल अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें बनवाने पड़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने की है. उसके बाद अगला आइटम आ जाता है इंस्पेक्टिंग डिटेल.
इसमें इंस्पेक्टिंग एजेंसी कौन है और उसका एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्टिंग एजेंसी यहाँ पे खाली 2 एजेंसी का नाम ही लिखा गया है, क्योंकि फैब्रिकेटर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये कॉलम पूरी तरह से लागू हो गया है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आएगी और FIU, 2 तरह से अंतर आता है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी में जानबूझ के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई बार हमने एकॉन, MRPC या किसी और को दे दिया काम करने के लिए, तो या तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या और कोई भी एजेंसी जो काम कर रही है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन तो ये रैंडम है या 100% है या 50% है, व्हाटएवर। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिकॉर्ड, किस टाइप रिकॉर्ड बनाना है, ये रिकॉर्ड में क्या चीज डालना है, और उसके बाद इंस्पेक्शन क्राइटेरिया। तो ये डॉक्यूमेंट जो रेफरेंस है उससे इंस्पेक्शन क्राइटेरिया या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए किसी IS कोड प्रिफर किया गया है तो IS कोड में कब एक्सेप्ट हो रहा है, कब रिजेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपके QAP में आ जानी चाहिए। Now this is the list of various component and operations. सबसे पहला आइटम ऑब्वियसली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपको स्टील प्लेट आएगा, HSFG बोल्ट आएगा, इसके साथ में PTI वॉशर है, पेंट वगैरह है, एल्युमिनियम वायर है, वेल्डिंग कंज्यूमेबल है, स्टड है। इस तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5-6 आइटम है, लेकिन अगर आपको कहीं पे नट बोल्ट वगैरह भी लग रहा है तो उसमें यूज होगा, या कुछ और ऐसे आइटम हैं जो यहाँ लिस्टेड नहीं है, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और यू कैन मेक योर QAP मोर एग्जॉस्टिव। देन व्हाट आर दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाएगा लेआउट ऑफ कंपोनेंट, जॉइंट, क्रॉस फ्रेम, डायफ्राम और एनी अदर मेंबर। तो ये सबका लेआउट बना के चेक करके देख लेना है फिट एंड पॉसिबल हो रहा है या प्रॉब्लम है। उसके बाद जिग, मास्टर प्लेट, टेम्पलेट, प्रोफाइल गजेट, all these things you have to check it. What are the various gauges and templates? That should also find a place somewhere in the QAP so that it is an item which has to be adhered to. Then comes the material cutting, including dressing, grinding, straightening, marking. तो ये मटेरियल के साथ हम इसको कैसे कट करेंगे, कट करने के क्या तरीके हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड आ जाएगी। तो ये सारे आपका एक ऑपरेशन बताया जा रहा है यहाँ पे। एज एंड सरफेस प्रिपरेशन प्रायर टू वेल्डिंग, क्या करना है, कहाँ कहाँ वेल्डिंग में आपको कैसे क्या करना है, ये सारे आइटम इसमें आएंगे। देन इट इज वेल्डिंग आइटम। वेल्डिंग में आप WPSS, WPQR कैसे देखेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे, इधर प्रीहीटिंग करनी है या नहीं, इलेक्ट्रोड फ्लक्स की बेकिंग करनी है, कैसे करनी है, कितना करना है, क्या फ्रीक्वेंसी पे करना है, और सिलेक्शन ऑफ करेक्ट इलेक्ट्रोड फ्लक्स वायर, ऑल दीज थिंग। Then verification of building parameter, sequence of building, provision of run off and run on pieces। उसके बाद आइटम आ जाएगा इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग, फिलेट वेल्ड की इंस्पेक्शन, बट वेल्ड की इंस्पेक्शन और स्टड वेल्डिंग का इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आइटम आ जाता है ड्रिलिंग, फिर फर्स्ट स्पान का इंस्पेक्शन। यहाँ तक आपका जो है इट इज मेजॉरिटी ऑफ फैब्रिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब उसके बाद फर्स्ट स्पैन का इंस्पेक्शन है, उससे पहले आपका कंपोनेंट इंस्पेक्शन भी आएगा, वो एक और चीज का है। उसके बाद फर्स्ट स्पैन आप असेंबली करेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्पैन की आपकी शॉप में टेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद ट्रायल असेंबली बनाएंगे, उसके बाद डिसमेंटल कंपोनेंट का इंस्पेक्शन में क्या क्या देखेंगे, फिर इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट फॉर द सेकेंड स्पैन ऑनवर्ड्स, फिर सरफेस प्रिपरेशन और उसके बाद पेंटिंग का आइटम आ जाएगा, फिर फाइनल स्पैन। तो इस तरह से ये सारे आइटम जो हमारी फैब्रिकेशन प्रोसेस में डिफरेंट शॉप्स में किए जाते हैं, ये सब एक एक करके यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद now let us talk each and every individual component separately। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बारे में आपने कल काफी डिटेल में पढ़ा है। So passing of raw material is to be done on the basis of visual inspection, MTC, lab test,
It is for the mechanical properties, chemical properties, ultrasonic examination, CRP. What are the various tests? It has to be all everything. Then stud and HSFG bolt assemblies, other consumables like welding consumables, paint should also be got tested from the government lab, accredited lab before passing of the material. Sample collection should be witnessed by engineers of the executing agency. ये सारा का सारा काम करने के बाद रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन होगा. Then engineer of the executing agency and fabricator should keep a watch to maintain proper record for ensuring use of approved raw material. कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि हमने जो अप्रूव मटेरियल है वही उसी का इस्तेमाल किया है. Ensuring use of approved welding consumables. Material testing certificate register must be maintained. Record keeping of consumables if necessary for future verification. कहने का मानना ये है कि डिटेल्ड रिकॉर्डिंग होना चाहिए. जब भी इसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आएगा, कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, फेल्योर होता है, आप पेमेंट नहीं करते हैं, किसी भी दिस आर्बिट्रेटिंग एजेंसी में जाएगा तो वहाँ सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी और उस चीज में बड़ा ये प्रॉपर सेट प्रोसीजर है. एक्चुअली जो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है उनका काफी सेट प्रोसीजर है. खासतौर से बड़े बड़े फैब्रिकेटर्स जो है इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते हैं, काम करते हैं, उनके पास है ये. तो अगर हम उसी को प्रॉपरली अपने सिस्टम में अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वी विल बी द नेट लूजर. खराब मटेरियल एक्सेप्ट करना पड़ सकता है या हमें ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. ये एक टिपिकल प्रोफार्मा दिया हुआ है जो आपका क्यूएपी का पार्ट होगा कि ये क्या कंपोनेंट है. वो सारे के सारे जो शुरू के आपके 11 रो की हेडिंग थे वही ये है. कंपोनेंट क्या है? पहला आइटम आ गया आपका रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल में स्टील प्लेट एंड अदर स्ट्रक्चरल स्टील का सेक्शन आ गया. केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज गिवन इन IS 2062. अब यहाँ से आपने उसको स्पेसिफिकेशन देना चालू कर दिया. किलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग एज पर ग्रेड ऑफ स्टील. तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है. कितना चेक करना है? 100% चेक करना है. 2 सैंपल पर हीट. जितने भी हीट से मटेरियल सप्लाई हुआ है हर हीट से कम 2 सैंपल चेक करने हैं. क्या चेक करना है? केमिकल चेक, टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, बेंड टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये सारा चेक करेंगे. उसके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आपके? चलान है, MTC है, IS 2062 है, IS 2500. इस तरह के जितने भी कोडल प्रोविजन है, कहीं पे IRS B1 भी आएगा, कहीं पे स्टील ब्रिज कोड भी आएगा, वगैरह वगैरह, वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं. उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जो कॉन्ट्रैक्टर या फैब्रिकेटर के पास है. वेरीफाई मैचिंग एंड कास्ट मार्क ऑन मटेरियल एंड MTC. वेरीफाई मटेरियल इज एज पर स्पेसिफिकेशन. उसको ये वेरीफाई करके फर्स्ट स्टेज पे ही एंट्री मारनी है इस एक रजिस्टर्ड उसके क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट में. और इस क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्रैक्टर को साइन करना पड़ेगा जब वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को सबमिट करेगा कि साहब हमारा ये क्वालिटी कंट्रोल लेके गए. वो कब आएगा? जब ये इंस्पेक्शन आया एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का एंड FIU का. एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और फैब्रिकेटर इसमें दोनों साइन करके देंगे कि ये 100% वेरीफाई हुआ है. इंस्पेक्टिंग एजेंसी कितना करेगा? एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन 100% वेरिफिकेशन एंड सैंपल टेस्ट बिफोर पासिंग. एग्जीक्यूटिंग एजेंसी 100% क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट मार्क एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट एटसेट्रा. तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर या फैब्रिकेटर के रिकॉर्ड को 100% वेरीफाई करेगा. वेरीफाई करने के बाद वो FIU को देगा. FIU भी उसको वेरीफाई करेगा और जो लेबोरेटरी टेस्ट के रिपोर्ट्स आए हैं उनसे कंपेयर करके इसको पास करेगा. तो यहाँ पे अभी पास नहीं हुआ है. ये जो यहाँ तक है इट इज नॉट येट पास. इतना हो जाने के बाद भी आपके पास सामान मौजूद है, आपने इसके क्वालिटी एश्योर कर लिया, लेकिन अभी भी आप उसको काम में नहीं ला पाएंगे. काम में लाने के लिए ये FIU का पासिंग होना जरूरी है. तो इससे आपने इंश्योर कर लिया कि आपके रॉ मटेरियल जो है वो परफेक्ट है. कौन सा रिकॉर्ड बनाएगा? फैब्रिकेटर सर्टिफिकेट रजिस्टर, लैब रिपोर्ट फाइल. कहने का माने जो भी रिकॉर्ड है ये कहीं ना कहीं रखे जाएंगे.
उसका नाम आप रखिए, चाहे टेस्ट रजिस्टर रखिए, रिपोर्ट फाइल रखिए, या जो भी डॉकेट नंबर 1 2 3 कुछ भी रखना है, वो रिकॉर्ड यहाँ मेंशन हो जाएगा। उसके बेसिस पे ये अगेन मटेरियल बाय मटेरियल ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। जब फाइनल पासिंग होगी तो सारा वहां पे एक सिरे से वेरीफाई हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट हमने बनाए थे, हमारा पूरा का पूरा वेरीफाइड है, स्टेज वाइज इंस्पेक्शन हुआ है, स्टेज वाइज अप्रूवल हुआ है, स्टेज वाइज पासिंग हुई है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? केमिकल कंपोजिशन एंड मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग एज पर IS 2062 ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रेड ऑफ स्टील। तो 2062 में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है यहाँ मैच कर जा रहे हैं, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद फाइनली इंस्पेक्टिंग एजेंसी ने इसको पास कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोबारा से रीइटरेट किया गया है कि बिना FIU के पास किए इस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। या अगर कुछ और यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये एक सैंपल प्रोग्राम है जिसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये स्टील प्लेट अदर स्ट्रक्चरल स्टील के लिए इसका दूसरा पार्ट है जो फिजिकल डायमेंशन टॉलरेंस चेक करना है, फिजिकल कंडीशन करना है, फिटिंग, रस्टिंग, स्ट्रेटनिंग, ऑयली, रोलिंग और कोई इसमें अदर तरह के डिफेक्ट्स तो नहीं है। ये जो हमने बिल्ट सेक्शन ले लिए हैं, रोल सेक्शन ले लिए हैं या प्लेट में 100% कितना है? Visual inspection and physical measurement with tape, vernier calipers, tri-square gauges, etc. to check if it is exactly correct as per size, shape, और उसका डॉक्यूमेंटेशन सर IS 1852 जिसमें आपको दिखाया था रोड सेक्शन खासतौर से आउट ऑफ स्क्वायर तो नहीं है, उसमें साइड स्वे तो नहीं है, उसमें कैम्बर तो नहीं, सारी तमाम चीजें इसमें दिखाई थी, वो वहां से चेक करना है, वहीं से रेफरेंस आ रहा है। विजुअल इंस्पेक्शन एंड फिजिकल मेजरमेंट, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो 100% विजुअल इंस्पेक्शन करेगा, रैंडम फिजिकल मेजरमेंट करेगा। यानी देख के देख लिया कि वो पिटेड और रस्टेड मटेरियल नहीं है, और रैंडमली आपने लीजिए 100 टन आपके पास ये चैनल सेक्शन आया है, उसमें से आपने रैंडमली 2-4 टन को चेक करके देख लिया कि उसका मेजरमेंट सही है या नहीं, वो दैट हैज बिकम रैंडम फिजिकल मेजरमेंट। नाउ इंस्पेक्टिंग एजेंसी जो है ये 100% पासिंग आ जाएगा। ये यहाँ पे लिख दिया पासिंग ऑफ मटेरियल बाय इंस्पेक्टिंग एजेंसी 100% है। बेस्ड ऑन इंस्पेक्टिंग एजेंसी कैन डू विजुअल इंस्पेक्शन एंड बेस्ड ऑन द विजुअल इंस्पेक्शन एंड रैंडम फिजिकल मेजरमेंट बाय द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसको सर्टिफाई कर रही है तो इंस्पेक्टिंग एजेंसी रैंडम इंस्पेक्शन करके 100% पास कर सकती है। टाइप ऑफ रिकॉर्ड, फैब्रिकेटर्स मटेरियल इंस्पेक्शन एंड पासिंग रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, फिजिकल कंडीशन एंड डायमेंशन, वो यहाँ पे देख के आपने इसको एक्सेप्ट किया और पास कर दिया। प्लेट के लिए खासतौर से ये तीसरा आइटम आ जाता है जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की है। 100% for plates above 8 mm, detection of flaw, porosity, lamination, slag inclusion, all those things has to be seen. इसके लिए ASTM के ये और IS कोड हैं जो भी अवेलेबल हैं, आप जो भी मेंशन करेंगे उसका पैरा देखना जरूरी है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, इंस्पेक्टिंग एजेंसी, ये जो है 100% है, तो इसकी जो रिपोर्ट आएगी इंस्पेक्टिंग एजेंसी या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वो खुद अल्ट्रासोनिक टेस्ट नहीं कर रही है, तो उसकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो कहेंगे कि हमारा 100% मटेरियल अल्ट्रासोनिकली टेस्टेड है और अल्ट्रासोनिकली सर्टिफाइड ओके है। इसके लिए रिकॉर्ड आप जो ले रहे हैं वो FTC एटसेट्रा मिल जाएगा, जो सर्टिफिकेटर को किसी न किसी रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फ्री फ्रॉम इंटरनल डिफेक्ट्स, ये जो चीज यहाँ से रिपीट हो जाती है, जो रिपोर्ट आपको सप्लाई होगी, ये जो रिकॉर्ड वगैरह मिलेंगे उसमें आ जाएगा ये 100% फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक सजेशन यहाँ पे कल भी बोला था कि अल्ट्रासोनिकली टेस्टिंग शैल बी डन अलोंग विद रोलिंग, द सेम शैल बी मेंशन्ड इन द परचेज ऑर्डर।
as the cost of ultrasonically testing done by the manufacturer is low and its effectiveness is high. वहां पे जैसे जैसे मटेरियल आपकी आ रही है, दे आर हैविंग मैकेनाइज्ड अल्ट्रासोनिकली टेस्टेड प्लांट, उसमें मटेरियल पूरा का पूरा रोल इन करेगा और टेस्ट होके फाइनली बाहर आ जाएगा, और उसमें एक साथ सेवरल सेंसर लगे होते हैं। उसको 2-3 लोग बैठे ऑटोमेटिक प्लांट में मशीन पे चेक करते रहते हैं, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वो उसको आगे पीछे जॉब को करके देख लेते हैं। इसकी रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको प्लांट में चेक हो जाना अच्छा है। दूसरा ये कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उनका बिल्ट इन है, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। बाहर आप करोगे तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, फॉर दैट यू हैव टू एंगेज इन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, दैट विल बी वेरी कॉस्टली, सो people tend to avoid it. So आपकी मटेरियल अल्टीमेटली ऑन पेपर में भी अल्ट्रासोनिकली टेस्टेड, एक्चुअली इट मे नॉट बी। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और अल्ट्रासोनिक टेस्टेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट खासतौर से थिक प्लेट में आती है, और वो वेल्डिंग जोन में जो उसका हीट अफेक्टेड जोन है वहां पे इसमें माइक्रो फिशर्स आ जाते हैं जो अदरवाइज नहीं होते हैं। तो अगर अल्ट्रासोनिकली टेस्ट किया है तो हो सकता है वो आपको माइक्रो फिशर्स पकड़ में आ जाए और वेल्डिंग करते समय वो ओपन ना होंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आइटम। हाँ जी सर, जैसे आप बता रहे हैं कि इनके पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग यूनिट्स रहती हैं जी, तो हमारी एजेंसी और इंस्पेक्शन एजेंसी उसी टाइम पे उनको विटनेस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे नहीं तो। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको क्राइटेरिया लिखा है, व्हाट आई एम सेइंग, what is I am saying that the 100% inspection will be based on records, because inspecting agency और executing agency yes, जब ये लोग खुद विटनेस नहीं कर रहे हैं, ये जो कंपनी का सर्टिफिकेट है आप उसके बेसिस पे ही इसको पास कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए जिंदल स्टील से खरीद रहे हैं प्लेट या सेल से खरीद रहे हैं प्लेट, तो उसमें अगर आप लिखा हुआ है कि हम अल्ट्रासोनिकली टेस्टेड मटेरियल चाहिए, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंसर्न कि वो अल्ट्रासोनिकली टेस्टेड मटेरियल नहीं देंगे। अगर आपको इंश्योर करना है तो वेदर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और द ओनर यू कैन से एंड द इंस्पेक्टिंग एजेंसी FIU, यहाँ से कोई ना कोई उनके प्लांट को विजिट करके देख सकता है। ये आपका कहना सजेशन बिल्कुल सही है कि वहां विजिट करके देख लेगा, लेकिन वहां पे भी ये देखना है कि वो एम्प्लॉय हो रही है। नॉर्मली ये जो बड़े स्टील प्लांट्स हैं, आपका जिंदल हो गया, स्टील हो गया, they will not supply you inferior material and cost you for the higher one. सर जिंदल में भी मैं गया था जिंदल में सर। हाँ, तो उसमें सर वो नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम आती है, कभी कभार हायर थिकनेस को ही नॉर्मलाइज करके देते हैं हाँ, और लोअर थिकनेस में नहीं देते हैं। वो अब 40 अब 50 mm की नॉर्मलाइजेशन देते हैं, बाकी में नॉर्मलाइज रोलिंग करके वो देते हैं। अच्छा, और वो मेंशन भी कर देते हैं कि हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं अपने TDC में। हाँ, तो उस केस में वही है कि प्रॉब्लम तो आती है हायर थिकनेस में, तो चल जाता है फिर भी। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक दे विल से कि हमने नॉर्मलाइज किया है। एक्चुअली सर वो उसको नॉर्मलाइज रोलिंग लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार। ये यही चीज है, ये टर्म आपको देखना पड़ेगा कि वो इस टाइप की कंफ्यूजिंग टर्म ना इस्तेमाल कर पाए। लेकिन अगर ये इस टाइप की चीजें हैं तो अच्छी बात है, इस फोरम में शेयर हो जाने से बहुत अच्छा है और लोग भी थोड़े से केयरफुल रहेंगे। जी सर। तो ये चीजें जो है इसको थोड़ा इंसिस्ट करना पड़ेगा बार बार, तभी हो पाती है। हाँ जी सर, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे वो कुछ भी लिख के दे सकते हैं, एट द साइड वो क्या कर रहे हैं वो वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ता है। हाँ, तो जाना चाहिए, मैं तो इसके बहुत फेवर में हूँ, जितना ज्यादा आपका विजिट हो सकता है उतना अच्छा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे कितनी ज्यादा टाइम है हमारे पास, कितना मूवमेंट की कैपेसिटी है। नहीं तो ठीक है, आपका कोई सुपरवाइजर लेवल भी जा सकता है वहां पे, देख के चला आएगा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
जी सर। ओके, यानी ये कहीं ना कहीं बिल्ट इन हो जाता तो अच्छा रहता है। थैंक यू सर। ओके, लाइक अनदर आइटम HSFG बोल्टिंग असेंबली, कल आप इसको सुबह पढ़ेंगे ये HSFG बोल्ट का, तो उसमें और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं खाली मेंशन कर रहा हूँ, इसका डायमेंशन आपको चेक करना है, जैसे लेंथ कितना है, डायमीटर है, पिच कितना है, ग्रिप लेंथ कितनी आ रही है, उसकी मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेवेंट टू स्पेसिफिक क्लास क्या है। लॉट सैंपलिंग, इसमें एक तो आप देख नहीं पाओगे, एक लॉट आपने लिया उसमें कितने हजार थे, उसमें से आपने कुछ सैंपल ले लिया, उसके डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक किया। ये जो इसका रिक्वायरमेंट है या तो वो ड्राइंग में मिल जाएगा या BS111 में मिलेगा। BS111 काफी एलेबोरेट डॉक्यूमेंट है, वहां मिल जाता है, इट इज गुड। जो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, सर नमस्ते हाँ ये सर रामर सर हाँ प्लीज टेल। sir regarding inspection sir, because of corona account we are unable to go for inspection sir for this all fabrication work. So what is the alternative sir for this? If you cannot go inspection for consumables from the shops, Not only consumable sir, after consumable as well, consumable we went and inspected sir, because the fabrication we are unable to go and see sir, metallizing work and all, we are unable to go and see the inspection work. What is the alternative sir? Like ERC you can ask the local persons to go and inspect sir. the thing is that Yes sir. there is one very important aspect in fabrication. Yes. Yes sir. When you are instituting FIU, Sir. FIU is instituted based on the railway board order and it has been incorporated in your welding welded business. Okay. Yes sir. Yes sir. So there is no alternative has been mentioned. Yes sir. Whatever only thing is mentioned that FIU is to be constituted by zonal railway. Yes sir. Now when railway has constituted FIU, so that Yes, sir. FIU is having one grade officer or say some deputy, and below Yes, sir. him there will be so many other officers and supervisors. Yes sir. Now only since your problem, you wanted local person to be included, then that person included in FIU. That's all. Yes sir. But by the duties of that person, that is all. Yes sir. And then the concerned person who is going to inspect, he should be capable of inspecting. Going there for the sake of going will not help. Yes sir. If he is capable, you find that yes, he can do inspection. Of course, you involve him in that, and based on his Yes. inspection report, J grade Yes. officer can take a decision. But other railways, sir, what I'm asking, sir, it is other railways, sir. No, we are at Bengaluru, sir. No, at Alnavar and all Rajasthan area, so fabrication is going on, sir. So there we are unable to go and see the fabrication work, sir. Fine. So in that aspect, yes, sir. Even then, if you want somebody to be involved, Yes, then sir. you have to ask the concerned CB or concerned zone that Yes, Mr. X and Y, he can Yes, be sir. included in the FIU of South Central Railway. His report will be, are willing to accept his report. He Yes, will. sir. And if that particular railway say yes, then he will be included into his FIU. See, after all, Yes, he's an Indian railway guy. Na? Yes, yes, sir. Indian railway person, whether he is at South Central Railway or Southern Railway or Western Railway, how does it make a difference? Yes, yes, correct, sir. So Yes, sir. that is the way. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. This item, chemical analysis, tensile test, etc. is to be done, and manufacturer's test certificate, and what are the provisions given in BS111? Because BS111 I find a very good document prepared. It is very detailed. Lot many thing has been included in this document. So if it can be used, good. Then use of correct quality of material conforming to specification and use of correct quality of material. ये जो दो item लिखा हुआ है for HSFG board as well as for DTI washer, these material
fabricator quality control unit should certify. He should maintain in his record, and then inspecting agency has to say that it is being used, and for that random sampling for dimensional check can be done. Executing agency related to mechanical and chemical property, we can also use some random testing. So that is how it can be done. Then type of record, it will go into the fabricator's record of procurement and stock. वहां से आपको OEM के सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, तो जो वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है कि OEM ने जिस साइज के नट बोल्ट के लिए या DTI वॉशर के लिए दिया है, वेदर उसने परचेज किया है या उसने अपनी किसी सिस्टम कंसर्न से बोरो कर लिया है। तो अगर आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि कंसाइनी अथॉरिटी कौन है, कहाँ पे आया है और वहां से ये कहाँ गया है, तो उसका कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ मटेरियल होगा। This has to be seen and verified and taken into copy can be taken in your custody. So that will be. Then what is the acceptance criteria? Ultimately is the physical dimension and class and whatever the codal provision given in BS 111. Complete set shall be procured from RDSO approved. Complete set is important because if you get a nut from some supplier, bolt from some supplier, washer from some supplier, then there may be some mismatch. That is not a good practice. Try to get complete set as much as possible. Now, second type of raw material is coming paint and primers, physical inspection and chemical properties, random sampling per batch, chemical composition and physical inspection. Again, here Chalan manufacturer test certificate related to varies IS code, IS 51, IS 104, IS 2339, IS 5666 and so on. What are these these codes? Whatever has been mentioned in IRS B1. So accordingly it can be done. It is to be inspected by both executing agency and inspecting agency. Random sample as per discretion. If the inspecting agency, if you feel that okay, material whatever you are purchasing is okay, I don't bother about it, it is finally not affecting the strength of the structure, you can dispense with it. So it depends what is the feeling of the practice of the railway and the feeling of the executing agency, because these are not really very critical items. Then it will be based on the manufacturer test certificate and procurement detail and lab certificates. And then it should conform to the various codes as mentioned here, or if you want another special criteria which is suitable for the railway loading or railway structure, it can be mentioned here. Now this is typically related with your aluminum metallizing. Properties of aluminum wire, diameter, class and purity has to be and that random sampling per batch and chemical composition and physical inspection. Again, Charan, FTC and relevant highest specifications. So like that we can have the various provision for the, if the stacking is not good and they are acting moisture, then there will be problem. And use of the consumable as per specification, जो भी जिस डाया का इलेक्ट्रोड यूज होना है या जो डाया का वायर यूज होना है वही यूज होना चाहिए। उसका कंपोजिशन अगर कहता है कि वो कॉपर कोटेड है तो कॉपर कोटेड होना चाहिए, like that. Executing agency and welding agency, they have to inspect as per their discretion, because as and when it has been ensured WPSS or WPQR, then it is on to the contractor that he should use the correct material. As per discretion, that means there must be some random checking. It can be totally dispensed with, some random checking should be there. Then again, manufacturer's test record, certification of the procurement and detailed and lab test. So these are only thing is what are the material has been procured, welding is not yet done. And to be procured from RDSO approved banks or vendor. If it is available, then it should be RDSO approved. If it is not there, then obviously you have to go through it and check it and cross verify with some lab test.
Another material is coming, which is stud. Stud again, it has to do with the respect to mechanical, chemical properties, physical dimension, उसका लंबाई कितनी है, स्टड का जो प्रोजेक्टेड नेक है वो कितना है, इस टाइप की तमाम चीजें देखनी चाहिए ताकि it should be of the appropriate shape and size. Then expiry date of ceramic furels, क्योंकि otherwise it may attract some moisture, it may get cracked. That to be seen. And sampling as per BS 115 and chemical composition and mechanical properties to be checked. And as per drying requirement, कितने number लगने हैं, क्या spacing है, चालान and MTC. Then as per these ISO test and other applicable codes, so it should be checked and seen. And procurement of a stud of a proper diameter length specifies given as per the relevant code and the drawing. And again, it is as per their discretion. It again does not appear to be a very critical item. So here some relaxation may be possible because in order to the impetus to progress. Then manufacture test certificate, procurement and lab test, and then it shall be having information with IS BS 111 and their other applicable code. If any remark you wanted to mention here that how much percentage is to be checked, therefore description you can say 10% check is to be carried out, something like that. In general, manufacturing, when you are doing each and every stud, they used to hit and see that whether it has been connected properly. Then they are doing some ringing test or some bend test or whatever. So certain percentage is to be done. Every stud cannot be tested. So that has to be seen, and accordingly it is to be maintained. Now for these raw materials or the consumables, there must be some records. So this we will be covering in the you can say list of quality records. So these quality records are to be maintained and these has to be preserved throughout the fabrication process and produced before the inspecting agency as and required. One, you can say the receipt and issue register for the consumables. Second, you can say material test certificate for physical and chemical test of the raw materials. Here, this shall be made in this format. Detail of the item with manufacturer's name, whether item is approved by RDSO or not, manufacturer test certificate is there or not, and if it is there, what is the detail, how much quantity you have received, how much quantity consumed, how much quantity balance, so that there will not be any confusion at later stage. Then sign of the engineers from the fabricator and executing agency side, so that you know it is their material, their premises, they are doing correctly. And as and when it has been seen by the inspecting agency, he can put his initial and stamp so that no, up to so and so it is all done. Now after further he has to see it. Material test certificate, type and size of the rolled steel for the plate and other rolled sections. Invoice and challan reference. This is typically for the steel. Date, quantity, manufacturer and test certificate number, date, product ID, here the heat and cost number and the plate number. All those details should be available here. Grade of the steel in test certificate, ultrasonic testing detail, whether it is trimmed, untrimmed, photographs of the stencil, marking availability on the plate. Enclosure means challan or invoice test certificate shall be enclosed here, or if it has been enclosed and specified, then there should be a reference here. Then what are the inspection details? So see, this has to be a trusted document. These are having more component or more column as compared to whatever given in IRS B1. So anyway, these are records to be maintained. These should be verified and produced before the inspecting or FIU. So I am closing here. हेलो Yeah. हेलो सर, ये ट्रिम्ड एंड ट्रिम्ड क्या चीज होती है सर? अरे उसको ड्रेस करके दे रहे हैं स्टील को या नहीं ड्रेस करके दे रहे हैं, एज में उसके ट्रिमिंग है या थोड़ा सा वो शेप उसकी नहीं है.
Okay, sir. Okay. Many times after producing the edge will not be square, so उसको काट के square करके देते हैं, wastage आ जाएगी इसमें untrimmed. So any query or question here? Machining of butting end shall have the tolerances. I told it is 0.25 mm throughout. It is not 0.4 mm. So this is not the correct answer. Then extra tolerance may be permitted at isolated places on the butting lines. So this one be permitted by FIU. So if they are telling, okay, 0.25 is the general and 0.4 I am permitting at isolated places as per his discretion, so it will be both 1 and 3. Fabrication specifications are given in our IRAS P1. While cutting excess length should be 3 mm for plate 12 mm thick or less, 6 mm plate or more, both are correct. All flame cut edges shall be ground. Why? To obtain clean square and true edge. जैसा बताया था कि वो थोड़ा सा slant कटता है. To ensure that the end and faces are right angle to the member axis and to the joints. Both sentences are same thing. So दोनों सही हैं. Builder shall be in accordance with IS 813 आपको ये देता है वेल्ड का ड्राइंग से आप स्पेसिफाई करते हो. IS 817 उसका बताता है कि कैसे आप उसको सर्टिफाई करेंगे और IS 7310 बताता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी. तो इन दोनों के बेसिस पे आप वेल्डर को उसकी ट्रेनिंग को सर्टिफाई करेंगे. Then specification of weldable steel is governed in IS 2062. Relaxation of steel quality, that is quality A, quality B, B0, BR, whatever is that will be governed by CBE. So that we answer. So this I have taken a very basic questions so that all of you, it will give us an indication that how much we are able to listen or understand during the class. So that I have to go a little slow, and based on yesterday's feedback, I had gone slow. Otherwise, I would have completed by now this QAP completely. I had done almost 1/3 of the QAP, still not many things pending. So anyway, I have to cover more topic as requested related to WPSS and WPQR. One PPT I had made, it is not 100% complete, some partial it is there, but it is suffice to tell your doubts. So if time is there, then tomorrow we'll discuss it again. बोलिए. सर जो QP सबमिट करते हैं फैब्रिकेटर जो लोग सबमिट करते हैं QP, उसमें कई बार जो इंस्पेक्टिंग एजेंसीज का जो मेंशन रहता है सर, उसमें कई बार एम्बिग्यूटी हो जाती है कि ये रेलवे करेगा, RDSO करेगा. तो इस चीज को थोड़ा एक बार क्लियर कर देते कौन सा हर जो भी गर्डर है, जैसे कंपोजिट गर्डर है या बो स्ट्रिंग गर्डर है, अगर एक क्लास या एक छोटा सा करेक्शन हो जाता सर तो क्लियर हो जाती चीजें सर. ये आपका पॉइंट बहुत एलाबोरेट नहीं है, इट जस्ट वन लाइन पॉइंट. मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ इसमें क्या करना है. जहां तक जो रेलवे की बात है, रेलवे के लिए मैं बार बार FIU इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैब्रिकेशन इंस्पेक्शन यूनिट. ये FIU के बना देने के बाद जितने भी फैब्रिकेशन हो रहे हैं RDSO अप्रूव ड्राइंग के लिए, अगर RDSO अप्रूव ड्राइंग के लिए आप काम कर रहे हैं तो उस पे FIU का इंस्पेक्शन काफी है. ठीक है, आपको RDSO अप्रूव ड्राइंग के लिए RDSO के पास नहीं जाना है इंस्पेक्शन कराने के लिए. ये FIU जो जोन की है वो काफी है. तो इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके सर.
तो इसका माने कि आप RDSO अप्रूव ड्राइंग यूज कीजिए और खुद पास कर लीजिए। अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड ड्राइंग बनाई है तो आपको RDSO के पास जाना पड़ेगा पास करवाने के लिए। सर अगर जोनल रेलवे में FIU नहीं है तो जोनल रेलवे में अगर FIU नहीं है तो FIU बनाइए। किसकी थर्ड गलती पार्टी है? के लिए अगर CV RDSO को लिख रहे हैं तो RDSO ही करेगा RDSO के पास टाइम होगा तो करेगा, सर। RDSO के पास टाइम नहीं है तो नहीं करेगा। सर थैंक यू। 2017 से ये लेटर इशूड है कि FIU बना लीजिए। 17 में लेटर आया, 18 में आया, 19 में आया, 3 साल हो गए इसको रीट्वीट करते हुए। हम आज 21 में है, 4 साल बीत गए हैं इसको लेटर को इशू किए, इंस्पेक्शन को 2 साल से ये मामला जो है बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है। इस सभी टाइप के गैजेट्स में लागू होगा। हाँ, तो उसमें जो आपको कल क्लास पढ़ के सुनाया था मैंने वेल्डेड ब्रिज कोड का, उसमें कहा डिफरेंस क्या लिखा है उसमें ये थोड़ी लिखा है कि आप वेब गर्डर में करेंगे और ओपन वेब गर्डर में नहीं करेंगे। क्लास तो बड़ा क्लियर है कि जो भी इंस्पेक्शन करना है वो FIU करेगा। उस क्लास के हिसाब से RDSO अप्रूव ड्राइंग, हर तरह की RDSO ड्राइंग का इंस्पेक्शन FIU करके पास करेगा। सर नॉन अप्रूव्ड ड्राइंग्स ना यही तो चीज है, यही तो कह चाह रहा है इसमें कि अगर आप नॉन स्टैंडर्ड ड्राइंग ले रहे हैं जो RDSO अप्रूव नहीं है, पहली बात आप उसको लेना क्यों चाह रहे हैं? आपको बेनिफिट मिल रहा है। और अगर कोई ऐसी जैसे कुछ स्पेशल में हम लोग अपना एग्री मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, कोई इमरजेंसी, कोई मजबूरी है, किसी वजह से हमें करना पड़ रहा है, जी सर, तो उसके लिए आपको RDSO को अप्रूव करना पड़ेगा, RDSO उसको करेगा। उसके लिए FIU में नहीं कहा गया है। लेकिन वहां पे फिर जब आप RDSO करेंगे तो RDSO आपको पूछेगा कि पहले तो आप ये पक्का बताइए कि क्या वजह है कि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड ड्राइंग से। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो करेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो वापस आपको लौटा देगा कि ये स्टैंडर्ड ड्राइंग है, इससे काम कीजिए। हाँ जी बोलिए। जी Sir, but we stated that FIU should other than boosting guard. कहाँ लिखा है? सर जो हेलो, हाँ बोलिए। सर जो सेंट्रल रेलवे की जो FIU बनी है उनके जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें मेंशन किया है कि आपको अदर देन पोस्टिंग गार्डर इंस्पेक्ट करना। हाँ तो वो ठीक है, तो वो सेंट्रल रेलवे का अपना डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जब वो RDSO के पास जाएंगे तो RDSO उसको लिख के लौटा सकता है कि वो कह देगा भाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर वेल्डेड ब्रिज कोड ये आपको करना है। ठीक है, ये देखिए ये जो आइटम है ये तो बड़ा मैनेजमेंट वाला इशू है। इसमें मैं क्या डिसीजन लेता हूँ, मतलब मैं माने एक रेलवे क्या डिसीजन लेता है, RDSO क्या डिसीजन लेता है, बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद इस रेलवे की RDSO या बोर्ड से अच्छी दोस्ती है, उन सब चीजों पे निर्भर करेगा। RDSO का एक लेटर है सर कि बोस्टिंग खाली RDSO देके गए, वर्कशॉप एज वेल एज फील्ड। किस तारीख का लेटर है वो? आई थिंक सर 19 का ही है, अगस्त में। वो जरा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो तो करो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। सर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें डाल दिया है, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, देखता हूँ लेटर में क्या लिखा है। अच्छा है, मेरे लिए भी जानकारी है सर। हाँ जी बताइए। सर ये वेल्डेड ब्रिज कोड में जो आइटम नंबर 27 है, पैरा नंबर 27, जिसके तहत जो आप बात कर रहे हैं सर कि अपने को FIU बनाना है, इसमें सर जो टर्म आता है वो RDSO सर्टिफाइड फैब्रिकेशन इंस्पेक्शन यूनिट है सर, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं एग्री की, उसका मतलब ये है कि जो FIU रेलवे में बनेगी वो FIU को RDSO कहेगी कि ये कॉम्पिटेंट है इसको चेक करने के लिए।
हेलो हाँ सर, ये RDSO ने लेटर निकाल सर, RDSO ने एक लेटर जारी किया है 24/11/2020 में। इसमें लिखा हुआ है स्टील गर्डर अदर देन बोइंग गर्डर एंड नॉन स्टैंडर्ड एरोबी गर्डर, ये हाँ। FIR पड़ेगी सर। अच्छा, ये 24/9/2020 का लेटर है सर। ये यार मेरे इसमें को जरा आप व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं पढ़ लेता हूँ उसका पेजी क्या है। इसमें यस सर, इसमें लिखा हुआ अदर देन बोइंग गर्डर्स एंड नॉन स्टैंडर्ड एरोबी गर्डर्स, ये मतलब RDSO करेगा। इसके अलावा मतलब जो भी है वो FIU करेगा। नहीं, आप मेरे को भेज दीजिए चिट्ठी। आप अगर उसका आप अपने मोबाइल से ही फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक, ओके सर। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसकी लगाता हूँ। ठीक सर। So in any case, the FIU has to be certified by RDSO. That is what is the correction slip. 27 says. हाँ, पैरा 27 यही कह रहा है। मैं इसको शेयर करता हूँ, पता नहीं शेयर है, स्क्रीन शेयर तो है मेरी। ये पैरा 27 कह रहा है inspection and testing of welded joints, inspection of the welded bridge girder carrying rail or rail cum road traffic, whether of completely welded type or partially welded type, shall be done by the RDSO certified fabrication inspection unit set up in each zonal railway, headed by an officer not below J grade under CB of that railway. जो मैनुअल है, मैनुअल को सुपरसीड करने की पावर RDSO को किसी लेटर से नहीं आती है। रेलवे बोर्ड का लेटर आएगा कि ये पावर जो है वो सुपरसीड कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा, या एडवांस करेक्शन स्लिप आएगी। ठीक है, Okay, okay, okay. अगर RDSO या कोई जोन लेटर इशू कर देता है तो दैट विल बी इन कंट्रावेंशन टू द कोड और मैनुअल। हाँ, उसमें ये लिखा है कि यदि कोई करेक्शन करना है तो ड्यूली करेक्शन स्लिप जारी करके ही किया जाए। हाँ, तो मैं देखिए प्रैक्टिकली हम आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन जो जब हम लीगल टर्म्स में आ जाते हैं, जहाँ पे कोड की बात करने लगते हैं, तो वहां पे कोड सुपरसीड कर जाएगा। इसमें इन्होंने किसी तरह के टाइप का गर्डर की बात नहीं किया है, ओपन वेब गर्डर है, प्लेट गर्डर है, बोस्टिंग आर्च गर्डर है, कुछ नहीं कहा है। स्टील फैब्रिकेशन की बात सीधे वेल्डेड की बात कर दिया है। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। नथिंग स्टॉप एनी रेलवे टू सेट अप इट्स ओन FIU and pass it. But the second part of this para says alternatively, zonal railway may engage specialized third party, RDSO or any other public sector undertaking. So if we engage CIEL rights or welding Correct. institution, so they can be instituted without taking RDSO into confidence. Obviously, because when it is already included in that, it means that RDSO is having confidence, or the railway board is having confidence in all these third party. That is why it has been included. Fine. Only question will remain here that what are the modalities to be adopted to finalize such third party inspection unit. Again, that issue has to be dealt by the zonal railway with the railway board and RDSO. हम उसको कैसे फाइनलाइज करेंगे? आप राइट्स को देंगे तो आप किस बेसिस पे राइट्स को देंगे? यहाँ पे खाली एक लाइन लिखा है, having expertise in fabrication inspection, that's all. अब ये I think Central Railway has entered into an agreement with rights, and for other workshops they have given this work of FIU to rights. तो अगर सेंट्रल रेलवे ने किया है, उसका मिल जाता है, तो बाकी लोग भी उसी लाइन पे आगे बढ़ सकते हैं जहां ये प्रॉब्लम है। करेक्ट सर, ये जो फैब्रिकेशन है सर, ये ROB में भी लागू होंगे सर? यार यहाँ पे कहीं कोई अंतर नहीं है ना ROB में या रेलवे ब्रिज में। स्टील इंस्ट्रक्टर सीधे सीधे बोल दिया है। ROB IRC 24 वगैरह यूज होती है मोस्टली, तो उसके फैब्रिकेशन टोल्स वगैरह काफी वेरिएशन है इसमें हमारे रेलवे के हिसाब से।
IR-74 यदि हम देखते हैं सर, उसमें वेरिएशन अलग है, फैब्रिकेशन टॉलरेंस काफी ज्यादा है। कौन सी कह रहे हो? IR-24, IRC-24 इंडियन कोड है 24। ओके, आप अगर देखो IRC-74 के जो प्रोजेक्ट है, these are less stringent compared to रेलवे, उसके टॉलरेंसेस कम है। IRC-24 काफी ज्यादा है सर, फैब्रिकेशन टॉलरेंस ज्यादा का मान है। हाँ, स्लैक ज्यादा रिलैक्स्ड है। तो उसका एक कारण है कि जो रेलवे में हम लोग टॉलरेंसेस देते हैं, क्योंकि रेलवे का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिकली लोडेड है, कंपेयर टू हाईवे बहुत ज्यादा डायनेमिकली लोडेड है, तो हमारे इसलिए टॉलरेंसेस ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। हाईवे में इसलिए टॉलरेंसेस थोड़े कम स्ट्रिंजेंट हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो स्ट्रक्चर आप रेलवे के यूज के लिए बनाते हैं या रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाएंगे, वहां पे रेलवे जरूर आपको पकड़ेगी कि भाई आप मेरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट टॉलरेंस से बनाइए, लेकिन अगर अप्रोच स्पैन है तो वहां पे आप उनके स्टैंडर्ड बनाओ, वहां पे कोई नहीं रोकेगा आपको। अभी सर मेन प्रॉब्लम क्या है सर, जो रेलवे के ऊपर बनते हैं के, हाँ, उसमें यही जाता है भाई आप IRC-24 के हिसाब से चेक करो आप। अब IRC-24 के हिसाब से अगर आपको चेक करना है तो कहीं कहीं आप QAP में डाल के अप्रूव कराइए या कहीं ना कहीं गाइडेंस लीजिए। जहां RDS की जो ड्राइंग है उसपे तो उन्होंने IRC-24 नहीं लिखा है, उसमें वो तो IRS-B1 बोलता है। वहां पर है ना सर काफी। देखो जो RDS पे चीज फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि जो RDSO अप्रूव ड्राइंग है उसके लिए जोनल रेलवे की FIU कर जाएगी, लेकिन RDSO अप्रूव ड्राइंग नहीं है तो उसके लिए जोनल रेलवे नहीं है, RDSO हो गया। अब जब RDSO अप्रूव ड्राइंग है तो वो रेलवे ब्रिज हो या ROB हो, अगर ROB में उन्होंने लिख दिया है कि IRS-B1 फॉलो होना है तो IRS-B1 फॉलो होना है। अगर उन्होंने लिखा है IRC-24 फॉलो करेंगे तो IRC-24 फॉलो। तो उन्होंने तो नहीं लिखा, रेलवे RDSO की ड्राइंग में IRC-24 नहीं लिखा है। यस सर, तो आपको IRS-B1 ही फॉलो करना है। QAP में दिखा दिया जाए सर। हाँ, तो ये तो आप हैं, आप अपनी रेलवे में बात कीजिए, आपकी जोनल रेलवे जो कर लेती है वो QAP अगर RDSO से अप्रूव हो जाता है तो हो जाता है। कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड या मॉडल QAP अप्रूव होगा, उसमें वो जो लिखेंगे उस बेसिस पे आप बनाइए। ये जो मैं बता रहा था, मैं तो एक अपनी ओपिनियन है, अपना व्यू दे रहा हूं कि इस तरह के QAP डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेरा कोई स्टैंडर्ड सिमिलरली सर, रोलर बेयरिंग का QAP जब प्रिपेयर करते हैं तो वर्कशॉप वाले भी नॉन IRC का ही देते हैं। किसमें? जब रॉकर रोलर बेयरिंग ओपन वेब में जो लगा रहे हैं सर, हाँ, उसके लिए अगर QAP बना रहे हैं तो उसमें भी जो अप्रूव्ड वर्कशॉप वाले हैं, या हरियाणा का सर एक है स्टील मेटको, ये सब लोग भी IRC का ही नाम देते हैं लोड टेस्टिंग के में। हाँ, IRC का इसलिए देंगे कि IRC के डॉक्यूमेंट ज्यादा अवेलेबल हैं, रोड में ज्यादातर काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं, रोड का सारा स्ट्रक्चर कोई बाहर की फैक्ट्री बनाती है, जबकि रेलवे में ज्यादातर काम रेलवे के वर्कशॉप कर रहे हैं, तो उनको जो पता है वो बता रहे हैं। अकॉर्डिंगली सर लोड टेस्टिंग तो दोनों जगह अलग अलग है ना सर। अगर IRC नाम दे दिया तो उसकी लोड टेस्टिंग अलग है, 25 टन की लोड टेस्टिंग अलग है, तो वो प्रॉब्लम आएगी ना। तो सारी चीजें तो हमें देख समझ के ही काम करना है। वो इंटरप्रेट कर रहे हैं सर, हुआ नहीं सर, प्रेशर आ जाता है। जो फाइनल हो जाएगा बात उसी की करना पड़ेगा। सर ये टर्म अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर, RDSO सर्टिफाइड सर, इसमें कोई RDSO सर्टिफाइड जारी किया है प्लेसमेंट के लिए? गुड इवनिंग सर, मैं जय ब्रिज थाना बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए।
RDSO certified. Sir, regarding inspection of posting girder, sir, the one about letter there, sir, 15/7/2019. In that clearly it has mentioned, sir, that inspection of steel posting girder for ROB shall only be done by RDSO, both at workshop and site. वो लेटर भेज दिया हूँ, व्हाट्सएप कर दिया हूँ सर। Yes, sir. This same letter I have sent you in WhatsApp, sir. ओके ओके, देख के भी बात करता हूँ। हाँ हाँ, देखिए सर। सर 15 जुलाई 19 का है सर। सर एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर है सर। हाँ नहीं, कोई और भी बोल रहा था मैं। एक करके बोलिए। मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए, नाम बता दीजिए, मुझे पूछने में आसानी हो जाती है। जी, मेरा नाम मुजम्मिल सिंह है सर, मैं CW मनमाड़ वर्कशॉप। हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन ये था कि आपने मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए जो इंस्पेक्शन टीम बताई है, तो यहाँ पे इस वर्कशॉप में FIU भी है और मेटलर्जिकल लैब भी है और प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट भी है जी। तो इसमें इंस्पेक्टिंग एजेंसी कौन रहेगा सर? मटेरियल टेस्टिंग के लिए कौन नॉमिनेट होगा? ओके, जैसे आप मनमाड की बात करेंगे, अगर मनमाड में आपका जो इंस्पेक्टिंग डिप्टी CMM मनमाड को बना दिया, इसको बनाया डिप्टी CM को। जी सर। ठीक है, तो आप इंस्पेक्शन टीम के हेड भी हो जाते हैं जी। और अगर आप क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट के हेड भी हो जाते हैं और आप ही क्वालिटी कंट्रोल के हेड हो जाते हैं जी। हेलो, नहीं, अगर आप ही तीनों चीज देख रहे हैं जी सर, अगर तीनों चीज आप ही देख रहे हैं तो आप किसी को भी फेवर कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो रेलवे बोर्ड का लेटर है या जो इस कोड में आया है, उसके हिसाब से वो CBE के अंडर होना चाहिए। तो मनमाड वर्कशॉप का जो हेड है, ही में भी J ग्रेड ऑफिसर, क्या वो CBE के अंडर में है या किसी और के अंडर में है? सर मनमाड वर्कशॉप में जो CWM सर है वो CBE के अंडर है और वो J ग्रेड ऑफिसर है सर। हाँ ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, लेकिन अगर यूं देखा जाए तो ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पार्टी। फैब्रिकेशन भी कर रहे हैं, वही इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और वही टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो देयर आर ऑल द चांसेस दैट देयर कैन बी सम मैनिपुलेशन इन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई हाईली अप्रिशिएट द ऑफिसर सिटिंग देयर इज हैविंग हाई इंटीग्रिटी एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आती है वहां पे कम से कम 2 लेवल तो होनी चाहिए। आप इसका प्रिंसिपल से समझ सकते हैं कि सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो CRS होता है वो एक्स रेलवे मैन ही होता है और रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर भी नहीं होता है। उसका पर्पज सिर्फ यही है, जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है वो नॉलेजेबल होना चाहिए रेलवे के बारे में, रेलवे के काम के बारे में और रेलवे की रिक्वायरमेंट के बारे में, लेकिन वो रेलवे के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ताकि ही शैल नॉट बी टोल्ड एनीबडी दैट ही इज बायस्ड एंड हिज डिसीजन इज बायस्ड। तो मॉरली कुछ चीजें सही नहीं होती हैं, टेक्निकली हो सकता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन। हेलो सर, ये लंच से पहले सर डिस्टोर्शन का ओपन वेब गर्डर का जो टॉपिक चला हुआ था सर, मेन क्या सर, TI वगैरह करते हैं सर फील्ड में जाके ओपन वेब गर्डर की, उसमें डिस्टोर्शन जो लिखा जाता है उसका अलग क्राइटेरिया है सर, उसका कोई फिक्स है जी, ये इस तरह करना है हमारे को? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा, फिर से बताइए। सर जब हम ओपन वेब गर्डर की TI करते हैं टेक्निकल इंस्पेक्शन
फील्ड में जाके हाँ तो उस ओपन वेब गर्डर का डिस्टोर्शन वगैरह चेक करना होता है जी। हाँ और जो डिस्टोर्शन है उसका कोई फील्ड फिक्स क्राइटेरिया है जी, किस तरह उसकी मेजरमेंट करनी है। यदि हम IRC B12001 में देखते हैं तो इसमें कुछ अलग लिखा हुआ है सर, और फील्ड में अलग तरह से करते हैं। देखिए, इसमें जो आपका ओपन वेब गर्डर है, ओपन वेब गर्डर के हर मेंबर को आपको डिस्टॉर्शन के लिए चेक करोगे, ये कह रहे हैं ना आप? यस सर, यस सर, यस सर। तो मेंबर का जो डिस्टॉर्शन, फील्ड में क्या करते हैं, थ्रू आउट एक स्ट्रिंग लगाते हैं फर्स्ट से लास्ट तक और पूरा देखते हैं उसको, उसमें अलग से पैनल नहीं देखे जाते जी। देखिए, इसमें जो भी डिस्टॉर्शन चेक करना है वो मेंबर बाय मेंबर चेक करना है। पहली बात ये कि सारा मेंबर अपने आप में डिस्टॉर्शन से फ्री हो या विद इन लिमिट हो, और उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्शन से फ्री है या उसके लिमिट में हो। तो दोनों चेक जरूरी है इसमें। आप एंड टू एंड चेक अगर नहीं करेंगे तो आपका पूरा मेंबर पूरा का पूरा ट्रस्ट डिस्टॉर्ट हो गया है, वो एक प्लेन में नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर मेंबर आपका इंडिविजुअली डिस्टॉर्शन में आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और जब तक मेंबर रेक्टिफाई नहीं करेंगे आप ट्रस्ट को करेक्ट नहीं कर सकते। जो IRS B1 2001 है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग लिखे हुए हैं सर ओपन वेब गर्डर में, ये सर लिखा 0.001L। एक मिनट, आप मुझे इसका पैरा नंबर बताइए, मैं खोलता हूँ। क्या पैरा है, पैरा बोलो। ये सर अपेंडिक्स 2 IRS B120। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, मैं खोलता हूँ उसको। यू के केस में क्या रहेगा जी? हाँ, तो इसमें जो L की वैल्यू है वो ये L है। ओके, पैनल टू पैनल जी। हाँ, ये जो देखो इसमें ये क्या चीज है कि ये मेंबर जो है ना, ये वाला मेंबर, यस सर, इसको एक ये लैटरल सपोर्ट है, एक ये लैटरल सपोर्ट है। यानी ये जो दोनों आपके ये मेंबर हैं ये इसको लैटरली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से टॉप पार्ट में अगर आप देखोगे तो टॉप पार्ट में उसको जो स्वे ब्रेसिंग्स हैं उससे सपोर्ट मिल गया है, उसी तरह बॉटम पार्ट में उसको क्रॉस गर्डर से सपोर्ट मिल गया है। तो उसके बीच में है सर, जो डिस्टॉर्शन है वो एवरी पैनल पर मापेगा जी। जो डिस्टॉर्शन जब ये मेजरमेंट करेंगे सर, डिस्टॉर्शन वगैरह यू की वैल्यू निकालेंगे, हाँ, तो एवरी पैनल की लंबाई लेनी पड़ेगी। हाँ करेक्ट, ये पैनल की लेनी पड़ेगी। जैसे 6 मीटर 6.9 मीटर वगैरह है ना, तो वहां पे लेंगे आप पूरा का पूरा 45 मीटर नहीं लेंगे, उसको 6.9 लेंगे। ओके सर, तो ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी कंपेयर टू, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मान लो 45 मीटर का है सर, 45 मीटर ले लेते हैं एल की वैल्यू। नहीं, उसको नहीं लेना है, और उसको जो है वो मेंबर बाय मेंबर ही चेक करना है। उसको पूरा कॉर्ड ये नहीं करना है कि जैसे आप कह रहे थे ना कि वो कर देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ से कॉर्ड स्ट्रेच कर दिया और पूरे को नाप लिया। यस सर, नहीं, ये नहीं है, ये मेंबर बाय मेंबर आपने यहाँ से यहाँ के बीच में कॉर्ड स्ट्रेच करेंगे और यहाँ नाप लेंगे कि ये कितना बाहर गया है। यस सर। और फिर हमारे यदि हम पूरे है, यदि हमारा कोई भी ज्वाइंट अंदर या बाहर आ जाता है अलाइनमेंट से, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है सर, कितना बाहर हो सकता है या कितना अंदर हो सकता है? नो, एक मिनट, अगर आप ये ज्वाइंट की बात कर रहे हो कि आपका ये ज्वाइंट ही बाहर आ जा रहा है, ये ज्वाइंट जो है ये बाहर आ गया है, तो मान लो बाहर आ गया सर, यानी आपका ट्रस्ट जो है वो ऐसा हो गया है। यस सर, ठीक है, तो फिर इसमें ये आपको चेक करना पड़ेगा पूरा लेंथ, और ये पूरी लेंथ लेके 0.1 यूनिट देना पड़ेगा। इसके लिए इसमें डिफाइन नहीं है यहाँ पे, और उसमें डिफाइन नहीं दे रखा सर, तो देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं, करेक्ट, डिफाइन नहीं है यहाँ पे, आई एग्री, ये डिफाइन नहीं है। तो लॉजिक यही कहता है कि ये भी 0.01 L से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस केस में L जो है ये पूरी लेंथ आ जाएगी। ओके सर, ये लॉजिक कहता है, ये पॉइंट इसमें डिफाइंड नहीं है। इसको अगर कहीं फंस रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए आरडीएस को। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, राइट।